Salam to all the nations. You knows me, I am a teacher, YouTuber, and Montessori directress. My name is Manazama. Today I bring a video of computer subject. Let's start. How does a computer work? कंप्यूटर कैसे काम करता है एक कंप्यूटर? In order to understand how a computer works, you should first understand how machines work. Let us start with an example. Suppose you wish to make orange juice using a juicer mixer. You put some peeled oranges in the juicer. The juicer squeezes the oranges to take out juice. You pour the orange juice into a glass and then drink it. In the above example, there are 3 steps. The first step is that you put the oranges in the juicer. Oranges are the input you give to the juicer. The second step is carried out by the juicer. It squeezes the oranges to separate the juice. Squeezing is the process that the juicer carries out on the input. Next page. The result of squeezing is the juice that you pour out into a glass. The juice is the output you get from the process. So, the working of a juicer can be shown as follows. Oranges input, processing, squeezing, output, juice. Similarly, to make ice by keeping water in a freezer, you follow these steps. First, you put the water in a tray and keep it in the freezer. This is input. Second, the freezer cools the water. This is processing. Third, the result of cooling is ice. Ice is the output that you get from this process. So, you learned that machines perform their functions in 3 steps. These are input, processing, output. Similarly, computers also perform their work in 3 steps. Let us take an example. Suppose you want the computer to add 2 numbers, say 5 and 9, and give you the result of addition. This will involve the following steps. You need to supply the desired numbers to the computer, that is 5 and 9.
These numbers are called raw information or data. You also need to tell the computer what is to be done with these numbers, that is to add them. Telling the computer what work is to be done is called instructions. The data and instructions together is the input you provide to the computer. You give the input to the computer by typing from the keyboard. Therefore, keyboard is called an input device. Mouse is another input device. The computer works on the data supplied by you according to the instructions you have given. It adds the two numbers. The calculation work, that is the addition of two numbers, is called the processing. This is carried out by the central processing unit. Central processing unit is called CPU for short. The result of adding two numbers, that is 14, is the answer that is displayed on the monitor. This result is the output given by the computer. Since the output is shown on the monitor, monitor is called an output device. Keyboard input device, CPU processing device, monitor output device. Keyboard input device, CPU processing device, monitor output device. अब मैं कुछ चीज़ें शो कर दे रही हूँ जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट चीज़ें हैं। चले आइए देखते हैं। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और बताइएगा व्यूअर्स, कैसा लगा मेरा ये वाला वीडियो भी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और आप लोग उसको गौर से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। जो भी आपके पास रजिस्टर या कॉपी, जो भी चीज़ें हैं आपके पास अवेल हो, तो आप लोग उसमें लिख लीजिएगा। और कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और बुक्स रीडिंग क्या करें। बुक्स बहुत अच्छी होती है, रीडिंग करनी चाहिए। रीड करने से ही होता है कि सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है। और आखिर में मैं वही बात कहती हूँ, सारे इंसानों को, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और दिल से तासुब, हसद, सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए। और आखिर में मैं एक बात बताऊंगी, जो जिनका कंप्यूटर पे वीडियो अपलोड नहीं होती है, तो लैपटॉप में कोई फॉल्ट होता है, कभी कभार मोबाइल फ्रीज़ हो जाता है, अटक जाता है, तो उससे वीडियो नहीं जाती, तो आप लोग उस वीडियो को मोबाइल से दोबारा लैपटॉप पे डालें और फिर अपलोड कर दें, तो वीडियो अपलोडिंग हो जाती है। लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें, काम आ जाता है। कंप्यूटर इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। वीडियो दोबारा डालें लैपटॉप में और फिर दोबारा अपलोडिंग कर दें, तो आपकी वीडियो अपलोडिंग हो जाएगी। परेशान नहीं हुआ करें।
और पढ़ाई को बोझ ना समझें, खुशी खुशी पढ़ा करें, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। अब मैं जा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।